Hi guys, thank you for joining the webinar. If you can hear me, can you please type yes in the chat box so that I know that I am audible? Thank you, Anmol. Thank you, Rita. Thank you, Sahil. We'll wait for a few more minutes, say about 5 more minutes. It's 11:27 by my watch, so 3 minutes to 11:30. So we'll wait for a few minutes and then we start webinar. So थोड़ी देर wait करते हैं कुछ लोगों का and then हम इसको शुरू करते हैं. All right, guys. Thank you. We'll start in 1 more minute, guys. I'm switching on my camera. I hope you can see me. Hi, this is me. आपको मेरी तरफ से काफी सारे मैसेजेस मिले होंगे, काफी सारी वॉइस कॉल्स मिली होंगी और काफी सारा व्हाट्सएप भी मिला होगा. आई होप आप सबने हमारा वो आज के वेबिनार का व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन किया है. हैज एवरीबॉडी जॉइन्ड दैट ग्रुप? Ravindra, I was not speaking. Nobody was speaking. That is why no audio.
ऑलराइट सो जैसे आपको काफी सारा मैसेजेस मिला, so you got a lot of messages from my side, uh, because of which you are here and because of which I am getting a call right now. So give me one moment, guys. So guys, आप में से कितने लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है? जो आज की उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या कहते हैं, आज की मीटिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है। डिड नॉट रिसीव वेब लिंक। काफी लोगों को वेब लिंक ही नहीं मिला है। वाओ। एक सेकंड गाइस, माय रजिस्टर्ड नंबर इज नॉट ऑन व्हाट्सएप। मैं अभी चैट में व्हाट्सएप ग्रुप का वो डाल रहा हूँ, लिंक डाल रहा हूँ, तो वहां से आप इसको सर्च कर ली, वो कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। गिव मी 1 सेकेंड। एंड देन वी स्टार्ट। अच्छा, एक एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन आप लोगों से। मैंने काफी सारे व्हाट्सएप भेजे थे, काफी सारे व्हाट्सएप भेजे थे, काफी सारी मैसेज भेजे थे। डिड एनी वन ऑफ यू गेट एनॉयड? आप में से किसी को लगा यार बहुत ज्यादा हो गया? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ समबडी थॉट दैट यार ज्यादा हो गया। कम ऑन गाइस। कॉल्स वेर सुभाष रुस्तगी, कॉल्स वेर टू फ्रीक्वेंट। हाँ, आज सुबह से आपको 2 कॉल ज्यादा हो गए। मैसेज वॉज नॉट टू मच, डिडंट रिसीव योर मैसेज, वाओ। कॉल्स वेर टू मच। सो इन द सेम सेगमेंट ऑफ पीपल जिनसे हम बात कर रहे हैं, उसी में कुछ लोगों को कॉल ज्यादा लगे, कुछ को लगा कि मैसेज ठीक थे, किसी को मैसेज ही नहीं मिला। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू अ फॉलो अप। आई एम सॉरी, कॉल्स हो सकता है ज्यादा लग रहे हों, क्योंकि 2 कॉल्स सुबह शेड्यूल किए गए थे और वो ऑटोमेटिक कॉल्स होते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि उस पर कंट्रोल नहीं होता है। अर्ली मॉर्निंग, यार कॉल तो 10 बजे और 11 बजे के करीब लगाया गया था। So there was no early morning call. 9:30. Then I'll have to talk to my tech team कि अगर मैंने 10 बजे का लगाया है तो 9:30 कैसे जा रहा है. So I will make sure of that. Anybody who has not joined the WhatsApp group, I am pasting the WhatsApp group link here. ये मैं 3 बार पेस्ट कर रहा हूं, इससे आपको मिल जाएगा. प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप. यहाँ पे ही मैं काफी सारे रिसोर्सेस और एवरीथिंग आई विल शेयर ओवर हियर. ऑलराइट.
Just a moment, guys. Just a moment. चलिए अब शुरू करते हैं. I think everybody has joined, quite a few people over here. Now, for how many of you is follow-up actually a problem? Please type thumbs up or yes in the chat box. ये एक इंटरैक्टिव वेबिनार रहेगा. आई एम द ओनली वन कंडक्टिंग दिस. व्हाट्सएप भी मैं ही भेज रहा हूँ, ईमेल भी मैं ही भेज रहा हूँ, बात भी मैं ही कर रहा हूँ और कंट्रोल भी मैं ही कर रहा हूँ. So if there are pauses in between somewhere, please forgive me. और एक और चीज, if somebody in the chat says it is not audible, so do me one favor, please. अगर आपको मेरी आवाज उस टाइम पे आ रही है, write all okay और audible, so that I know कि मेरी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हो रही है. ये वहीं से कुछ जो भी दिक्कत हो रही है वहां से हो रही है. ठीक है? That way I am. That way I can help and concentrate on the webinar. Okay, so 1 second. ये आपका आ गया ऐसे, ये ऐसे. All right. So the webinar today is how to follow up with your clients without annoying them. आपके कितने सारे ऐसे clients हैं जो नाराज हो जाते हैं? Okay, कितने सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो नाराज हो जाते हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा फॉलो अप कर रहे हैं और उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं. दिक्कत होती है, काफी परेशानी होती है इन केसेस में. 1 second गाइस. ठीक है? सो मेरा पहला सवाल, हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू क्लोज डील्स फास्टर? Okay, how many of you would like to close deals faster? अभी आपका जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, there would be a gestation period. कोई 15 दिन का होता है, कोई 2 महीने का होता है, कोई 6 महीने का होता है, कभी-कभी तो साल भर भी लग जाता है. Now, what if I told you that you could close the deal in whatever time you're closing right now by reduce that by 50%. 50% कम टाइम में आपका काम हो जाएगा. Would that be good for you? Type yes in the chat box. मैं आपसे काफी बार कहूंगा कि कुछ ये टाइप कीजिए, कुछ वो टाइप कीजिए. प्लीज नाराज मत होइएगा और टाइप कर दीजिएगा. ऑलराइट. नाउ आप सब लोग all of you are into solar business. So this is generally how your usual business looks like. अगर आप already solar business करते हैं, चाहे you are into EPC, चाहे you are into distribution or OEM, generally this is how a business is handled. सबसे पहले तो okay, सबसे पहले तो एक लीड मिलती है. Step number 1, you get a lead, someone who is interested in solar or purchasing your product. All right, so that is how it starts. Then your job is that you need to know what the prospect wants. उसको चाहिए क्या? तो eventually you manage to get that information over a meeting or a phone call. आप उसको बुला लेते हैं, तो इसमें 4-5 बार फोन कॉल होती है. मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, बाद में बात करेंगे, फोन नहीं उठाया. ठीक है? एंड इसके बाद वेरिफिकेशन होती है. ये कॉल, दिस कॉल इज जनरली ओनली फॉर वेरिफिकेशन कि क्या तुम असली इंसान हो या इट्स ऑलरेडी ओनली डेटा. ठीक है? तो यहां पे आपका काम हो गया. देन आपकी बातचीत होती है एंड देन यू एग्री टू समराइज व्हाट वाज डिस्कस्ड. हमने ये बात की, वो बात की. ठीक है? फिर आप बोलते हैं सर हमने बात कर ली है, तो आई विल गेट बैक टू यू विद अ प्रपोजल बिकॉज़ कस्टमर टेल्स यू व्हाट दे वांट एंड ऑल दैट स्टफ. देन आप कभी कुछ घंटे लगाते हैं, कभी कुछ मिनट लगाते हैं, कभी आपको लगता है यार प्रपोजल देना ही बेकार है,
ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द वर्ड टेम्पलेट्स एंड एवरीथिंग, ये 15 मिनट में भी काम हो सकता है, ये 5 दिन भी ले सकता है। फिर आप बड़े प्यार से उसको प्रपोजल भेज देते हैं। प्रपोजल ईमेल पे भी जाता है, एसएमएस पे भी लिंक जाता है, फोन करके भी बताया जाता है कि भैया मैंने प्रपोजल भेज दिया, व्हाट्सएप पे भी जाता है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट रिसीव्स प्रपोजल, मैंने ये एक अलग स्टेप इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने अभी कहा कि व्हाट्सएप पे भी, ईमेल पे भी, फोन करके भी हम लोग वी मेक श्योर दैट कस्टमर इज शेयर्ड दैट इंफॉर्मेशन। देन फिर आपको लगता है कि भैया कस्टमर ने फोन नहीं किया वापस, कस्टमर तो बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हमने प्रपोजल भेजा है, फिर आप एक व्हाट्सएप भेज देते हैं, ठीक है, या ईमेल भेज देते हैं, या फोन करने की कोशिश करते हैं, या एसएमएस भेजते हैं। सो आप क्या करते हैं, यू ट्राई टू रिकनेक्ट विद द कस्टमर, ठीक है। प्रोस्पेक्ट कभी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केस में प्रोस्पेक्ट डिफ्लेक्ट करता है कॉल, या तो फोन नहीं उठाएगा, अच्छा अभी मैं बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूं, मुझे अपने कुत्ते या बिल्ली से पूछना है। नाउ आई एम बीइंग 110% sarcastic over here कि वो बहाने बनाता है, एक स्मोक स्क्रीन दिखाता है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है ना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड दिस? एक बहुत अतरंगी तरीके के बहाने, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, बड़े अजीब से बहाने जिनके आप कुछ नहीं कर सकते, बट पॉइंट ये है कि आप बोल भी नहीं सकते कुछ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड दैट? सी लॉट ऑफ पीपल हैव फेस्ड दैट। वंडरफुल, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओके, सो उसके बाद क्या होता है, आप स्टेप नंबर 8 और 9 रिपीट करते हैं विद एडिशनल बिजनेस। सर हमारा डिस्काउंट आया है, दिवाली चल रही है, न्यू ईयर चल रहा है, होली आई है, सर हमारे मोहल्ले में कुछ हो गया ऐसा, तो इसके बेसिस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। समथिंग और दी अदर आप बहाना बनाते हैं कि किस तरह से इसको डिस्काउंट मिले या ये हमारे साथ डील साइन करे। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता होल थिंग फिजल्स आउट। टेंस ऑफ आवर्स वेस्टेड बाय यू, योर टीम, आप उसके पास गए, आपने सब कुछ किया, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। वो चीज ये है कि आप इस प्रोसेस को फिर से शुरू करते हैं नए क्लाइंट के साथ। डू यू एग्री? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। डू यू एग्री? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, शर्माइएगा मत। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, एग्जैक्टली एवरी टाइम, एंड वी एक्सपेक्ट कि हम बार बार वही चीज करेंगे और हमको अलग रिजल्ट मिलेगा। These are called the 12 steps of doom. मेरा अपना दिया गया स्टेटमेंट है इसका, 12 steps of doom. Now question is, what is the problem with these 12 steps of doom? भैया ये तो ट्रेडिशनल वे है बिजनेस करने का, आज तक हम करते आ रहे हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसका ये है that they are completely reactive. कंप्लीटली रिएक्टिव का मतलब होता है कि आप ये जो भी स्टेप कर रहे हैं तब कर रहे हैं जब कस्टमर आपको कोई इनपुट देता है, आप अपने से नहीं कर रहे। आप उसको प्रपोजल तब दे रहे हैं जब आपकी उससे बात होती है, जब वो आपसे मांगता है। आप उसको फॉलो अप तब कर रहे हैं जब वो कुछ भी नहीं कर रहा है, दैट इज एक्शन टेकन बाय द कस्टमर। वो कुछ नहीं कर रहा है इसलिए आप फॉलो अप कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई भी रिएक्टिव, सारा रिएक्टिव स्टेप आ रहा है, प्रोएक्टिव स्टेप कोई भी नहीं है। सो अब वेबिनार की तरफ आते हैं। सो व्हाट विल यू डिस्कवर इन दिस मास्टर क्लास एंड व्हाट डू आई प्रॉमिस टू यू? ओके, वील टेक अ डीप डाइव इनटू द सोलर सेल्स फॉलो अप प्रोसेस। फॉलो अप प्रोसेस को किस तरह से किया जाता है स्पेसिफिकली फॉर सोलर ईपीसीज। ओके, ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड आई प्रॉमिस रोटी, मतलब यार मतलब खाने पीने की बात नहीं हो रही, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आप मेरे साथ 1 घंटा सवा घंटा लगाएंगे, आई प्रॉमिस दैट एट द एंड ऑफ इट यू विल गेट अ बेनिफिट। ऑलराइट, सो we do have some singers in the group as well, so thank you for that. Okay, so आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। दिस इज माय स्टोरी, ये मेरा ईमेल आईडी है एंड माय नेम इज अमित। मैं एक बहुत ही पैशनेट सा आदमी हूं और मुझे खाना बनाना बड़ा पसंद है। मेरा यूट्यूब पे भी एक चैनल है पापा कुकिंग, उसमें भी 4-5 वीडियो डाले थे टाइम पास के लिए। At present, I work with a company called Solar Labs, and it is a solar design software firm, ठीक है, based out of Bangalore. मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 2007 में की थी और ये सारा का सारा कैरियर मेरा सोलर में रहा है। I have worked from manufacturing of silicon to selling of and servicing of solar systems.
मैंने अपने हाथों से आई हैव बीन पार्ट ऑफ अबाउट 400 megawatts ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन इन इंडिया, ठीक है, एंड along with that about 700 megawatts of solar installation, ठीक है, इसका मैं पार्ट रहा हूं. So the question is, why am I here? भैया मैं आप लोगों के साथ सुबह सुबह आया हूं, आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे साथ ज्वाइन कीजिए. Why am I here? I am here because I want to create an impact in the solar industry. और मेरा आइडिया ये है कि I should be part of about 1 crore solar installations by 2025. अब मैं अकेले तो नहीं लगा सकता. So I need people like you, entrepreneurs like you, people who kind of move the industry to work with me on that. And for that, I want to create an movement. Okay. And I want to create an impact. So how many of you would like to create an impact in the solar industry? Please type impact in the chat box. IMPACT. How many of you would like to, as solar professionals, like to create an impact in the solar industry? Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you for the feedback. Thank you for the feedback. ठीक है, आप लोगों का feedback मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. Please keep that coming. All right. Now, coming to the topic, follow up. Follow up का सबसे पहला point ये है कि follow up starts before you talk to the customer for the first time. ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है भैया. फॉलो अप तो तब होगा ना जब कस्टमर से एक बार बात हो जाएगी, उसको कुछ दे दिया है, उसके बाद से हम फॉलो अप करेंगे. ओके, फॉलो अप एक्चुअली स्टार्ट्स व्हेन द कस्टमर सेंड्स देयर लीड टू यू और यू गेट दैट लीड. ओके, हमारा प्रोसेस क्या है? द 12 स्टेप्स ऑफ डूम जो हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे. गेट द लीड, मेक द कॉल, गेट द लीड, मेक द कॉल. और हम इसी चीज को रिपीट करते रहते हैं. लीड मिली, कॉल करो, लीड मिली, कॉल करो, लीड मिली, कॉल करो, उसको कुछ दिया, कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो. हमारे को सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती है इस बात की कि अगर हम बिना कॉल किए अपने कस्टमर को क्या करें, मतलब कनेक्ट कैसे करें. सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन सेल्स फॉलो अप? I would like you to give me an answer on that, and trust me, the answer is in the question. ये इस sentence में answer लिखा हुआ है. What do you think is the most crucial step in a sales follow-up? Come on, people, write in chat. What do you think is the most crucial step in the sales follow-up process? आपको क्या लगता है? Understanding his need. Okay, come on, people. आपको क्या लगता है फॉलो अप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? राइट इन द चैट, चैट में लिखें. अ स्टेप जनरेशन. ओके, फॉलो अप में क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है? गुड प्रपोजल. ओके, टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ क्लाइंट. फॉलो अप में फॉलो अप तो अच्छा स्टेप होगा ही होगा. Being responsible and listening to customer, making the client understand the importance of the product. Follow up, tech specs to be same tempo that needs to be fulfilled by us. Daily wishes, customer thinking. This was interesting. Chahat, customer thinking. Okay, his thinking. Okay, price is never the most important. What he's thinking, what exactly wants. So let me tell you now, the most important step, it's thinking. It's our thinking. हमें सोचना पड़ता. Okay, we have to kind of stop and think. जैसे सब्जी बनाते टाइम सब्जी को चॉप करना भी कुकिंग कहा जाता है, वैसे ही preparing yourself for the customer for the first call and conversation is also called follow up. So ये बहुत जरूरी होता है कि before we follow up we are aware. Okay, so एक फैक्ट आपके लिए, when you start a sale, जब भी आप पहली बार कनेक्ट करते हैं किसी भी कस्टमर के साथ, it takes 8 to 12 touch points for the customer to actually realize and acknowledge your existence. अब 8 to 12 टच पॉइंट्स का मतलब ये नहीं हो कि आप 8 या 12 बार कॉल करेंगे उसको, भैया वो कंप्लीटली छोड़ देगा आपको. ठीक है, आपका ब्लॉक करेगा, आपकी कंपनी के भी नंबर ब्लॉक कर देगा. ठीक है, अ कस्टमर हैज टू रियलाइज एंड एक्नॉलेज यू, बिकॉज आप वो जब ये आपको रियलाइज करता है और एक एक्नॉलेज करता है, तब एक स्टार्ट होता है ट्रस्ट लेवल बिल्ड होना. वहां से शुरू होता है कि हाँ, अगर ये मुझे कुछ बोलेगा तो मैं इस पे शायद ध्यान दूंगा. ओके, बिकॉज
अगर ये नहीं हो तो वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो उसके सर के ऊपर से जा रही है. So how many of you agree that follow-up is hard work and requires a planned approach? Please type T in the chat box. T for Tango. If you think that follow-up is hard work and requires a planned approach, please type T in the chat box. Okay, everybody agrees. हर एक को लगता है कि follow-up ये है. अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है हमारी या तो रैंडम फॉलोअप स्ट्रैटेजी है या हमारे पास फॉलोअप स्ट्रैटेजी ही नहीं है. ठीक है, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉलोअप दैट वी हैव. ना पहली बार अगर हम क्लाइंट को कॉल करें, आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस इफेक्ट. क्या हम क्या करते हैं? सर मुलाकात कर लें क्या? सर व्हेन आर यू अवेलेबल? ओके सर. सर आपने कोई डिसीजन ले लिया सर? अच्छा सर आज सर आई जस्ट वांट टू टेल यू हमारे साथ डिस्काउंट आया सर. ओके सर आपने क्या डिसाइड किया है? क्योंकि जब भी हम उसको कॉल करते हैं यही सवाल होते हैं, इसके अलावा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता. एंड दिस अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम हैज अ बूमरैंग इफेक्ट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट बूमरैंग. बूमरैंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक टॉय है ऐसा, जिसको आप फेंको तो दूर जाके वो वापस आता है. ओके, व्हेन वी ट्राई टू सेल एग्रेसिवली, बिकॉज ऑफ दैट द क्लाइंट गेट्स सो अनॉयड दैट दे स्टार्ट अवॉइडिंग अस कंप्लीटली. हमारे को छोड़ देते, भूल जाते हैं, और कभी कभी इतने ज्यादा औखे हो जाते हैं कि हमारे कंपटीशन से आके प्रोडक्ट ले लेंगे. आप प्लीज मुझे बताइए किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपसे नहीं, इतना इरिटेट हो गया हो क्लाइंट कि उसने आपके फोन के मतलब पूरी कंपनी के नंबर ब्लॉक कर दिए. Have you ever faced a client like this? Okay. No, not yet, not yet. Okay, कुछ लोगों ने yes, कुछ लोगों ने no. ठीक है. Okay, the best way to avoid boomerang effect is that we keep our contact value based. It's very important that we provide good value whenever we connect with the client. And for every contact we have with the client, we share something useful and of interest to them. और interest to them generalized नहीं होता है. It has to be specifically tailored to their particular requirement. Solar in general is not interesting for your client. Solar on their home, on their rooftop is interesting to your client. It's a big difference. जब हम बात करते हैं कि सर सोलर से इतना बचत होता है, आपके घर या आपकी फैक्ट्री पे लगे हुए सोलर से आपकी इतनी बचत होगी, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. So start giving value which is tailored. So what is the solution? Solution ये है कि आप अपना फॉलोअप प्लान करेंगे. प्लान योर फॉलोअप. नो व्हेन टू कॉल, व्हाट्सएप और ईमेल और कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया. हाँ, सोशल मीडिया पे फॉलो अप होता है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. टुडेज वर्ल्ड इस इन जगहों पे फॉलो अप होता है. फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता है कि यू आर ऑलवेज आस्किंग देम टू अच्छा अब कब मिले, अब कब बात करें. फॉलो अप का मतलब होता है आई एग्जिस्ट. that only that. Liking a post, sharing a comment, resharing their post, this is also part of follow-up. आज follow-up complex है. It is not about just connecting with the client and selling. But सवाल ये पैदा होता है, what do we send or share? भैया भेजे क्या? बात तो वही करनी है कि आपने डिसीजन लिया, अब आपका क्या हिसाब है, do you want to kind of get over and start this immediately? इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी सीक्वेंस देता हूं. इसके अलावा हम ये बात कर सकते हैं, जब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम, ओके, बिफोर टॉकिंग टू द कस्टमर अबाउट हे आई वांट टू मीट यू, यू हैव टू प्रिपेयर द कस्टमर. मैं अभी व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज भेजूंगा. ऑलराइट, यू विल गेट अ शॉर्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप राइट नाउ. तो it'll take me about a minute, क्योंकि मुझे अपना व्हाट्सएप खोलना है और फिर आप लोगों को मैसेज भेजना है. मैंने जो वो ग्रुप क्रिएट किया था व्हाट्सएप वाला, ये मैसेज उसमें आएगा. ओके, सो प्लीज बेयर विद मी. Everybody is part of that group, right? Everybody here is part of that WhatsApp group, correct? मैं अभी भेज रहा हूं आपको वो मैसेज.
All right, message sent. Please pick up your phones and check your WhatsApp. जो हमारा WhatsApp का ग्रुप है सोलर लैब्स 9 नवंबर वेबिनार, उसके आगे एक रेड कलर का डॉट होगा, आपको अभी अभी एक मैसेज मिला होगा, इसमें एक लिंक है. Now, how about approaching the customer like this? The first time you approach, आपने अभी कॉल नहीं किया, आपने उसके साइट विजिट के लिए कुछ बात नहीं की, ठीक है, आपने कोई साइट विजिट के लिए बात नहीं की, ठीक है, आप उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, आप उसको तंग नहीं कर रहे हैं, आप उसको बार बार कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसको ये मैसेज भेज रहे हैं. डू यू थिंक इट विल बी स्लाइटली मोर इफेक्टिव, ओके, स्लाइटली मोर इफेक्टिव इन attracting their interest? If yes, type T in the chat box. T for tango. Please, ladies and gentlemen, type. So this is a stage where you prepare your customer. For anybody who has not joined, आप अगर चैट में थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, 3 लिंक्स मैंने एक साथ शेयर किए हुए हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है. प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेंड मैसेजेस इंडिविजुअली. All right, it is not possible for me to share messages individually. ठीक है, प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. मैं व्हाट्सएप ग्रुप में 5 मिनट के बाद फिर से शेयर करता हूं. एंड आई विल शेयर दीज मैसेजेस in the group at the end separately also. Okay, I'll share once again. ये सबने ज्वाइन कर रखा है, मेरे को मैसेज के बाद I don't see. It's in the WhatsApp group Solar Labs 9 November. Cool guys, ठीक है. So this is where you prepare your customer. उसके बाद you can share system matrix, generation statistics, and then give them a call. और कॉल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अरे सर आपने क्या डिसाइड किया है. ओके, देन एक्सपेक्टेड एनुअल प्रोडक्शन, ब्लॉग अबाउट सोलर. अरे यार गूगल भरा पड़ा है. At the time you can just go ahead, search Google, what is latest in solar, pick it up and have a normal message sent. Hi sir, I found this blog while I was surfing the net and I thought about you. I just thought that this would be something interesting. I don't know whether you have read it already or not, but sharing anyway. You have a wonderful day. नीचे अपनी कंपनी का नाम, नंबर, ईमेल आईडी. यहाँ पे देखिए, ना आपने उससे बोला कि मुझे सेल चाहिए, ना आपने उसको बोला मुझे मीटिंग चाहिए, ना आपने उससे कुछ मांगा. All you're doing is you're giving. This is the part of follow up that each and every one of us misses out on. It is called connect. हमारे को लगता है कि जब भी हम फॉलो अप करें, it has to be about sale. It has to be about sale. चल भैया पैसे निकाल, वॉलेट निकाल, क्रेडिट कार्ड निकाल. It is not about that. You have to build that up. Follow up 10, 15, 20 दिन चलता है. अगर आपको सेल करनी है तो कम से कम 5 फोन कॉल्स लगते हैं थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ 10-15 days along with 3-4 meetings to close that. But then if you do just that, डील क्लोज नहीं होती है, वहां पे फ्रस्ट्रेशन आती है. आपको उन कॉल्स के बीच में, उन मीटिंग्स के बीच में अपना वैल्यू जो है कस्टमर को वो देते रहना है. थोड़ा 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 एक साथ दोगे तो भी ओवरवेल्म हो जाएगा, नहीं दोगे तो गया ही गया. इट हैज टू बी बूंद बूंद सागर बने, और कोई तरीका नहीं. ठीक है, देन बिल विद एंड विदाउट सोलर. आप पॉइंट 8 नंबर 8 देख रहे हैं. मैंने एक वीडियो एक्चुअली बनाया था. ठीक है, मैं आपको ये शेयर करता हूं, अभी व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा. एवरीबॉडी वॉच दिस वीडियो. ये मैंने कल ही बनाया था और इसी वेबिनार के लिए बनाया था. सो लेट मी शेयर दिस. नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप?
I shared this video. ये अभी ग्रुप में आ जाएगा. I would like you to see this video. It should take about 10-15 seconds. Upload हो रहा है. It is a very, very normal video which is not asking the customer about anything, which is not telling the customer कि आप हमें ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए. And sending a video means वो अपने हिसाब से उसको देखेगा जब उसके पास टाइम होगा. ओके, जब उसके पास टाइम होगा, यानी कि आप उसकी दिनचर्या को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, which means they are very calm and composed when they are looking at it, यानी कि अपनी एंटरटेनमेंट के हिसाब से. ऑलराइट, सो वीडियो अपलोड हो गया है. प्लीज हैव अ लुक, ओपन योर फोन, टेक योर फोन एंड प्ले द वीडियो. मैं वेट करता हूं, मैं इधर ही हूं. प्ले द वीडियो, देन गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ फीडबैक. I hope the video is over now. कुछ लोग देख रहे हैं अभी. So what do you think? अगर आपने ये वीडियो अभी देखा, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है नमस्कार शर्मा जी. Sharma ji is the name that I have taken for my purpose of talking. So now, do you think that this video will have an impact? If yes, type S in the chat box. S for Sam. If yes, type S in the chat box. Yes, thank you. That was a lot of S. All right. Cool. All right. So it is all about connecting with the client. ठीक है, बट ये सब कनेक्ट करने के लिए माल कहां से आएगा, सवाल ये पैदा होता है. Let me open. So the question is, where do you get the content from? ये कंटेंट कहां से आएगा, कहां से मिलेगा आपको ये कंटेंट? भैया अगर कस्टमर के साथ ये टेलर्ड कंटेंट शेयर करना है तो ये कंटेंट कहां से आएगा? भैया कंटेंट मिलेगा आपको सोलर लैब्स से. ठीक है, सोलर लैब्स इज अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ टूल. अगर आप देखें www.thesolarlabs.com, it's a tool that is for design and sales of solar. It will help you convert your deals faster. Now what I'm going to do is I'm going to share 2 reports in the group. So आप इसको, ये PDF reports होंगी. This is something that you get when you sign up for Solar Labs and when you kind of use Solar Labs. आपको 1 सेकंड में मिल रही हैं. I'm just sharing. ये पहली आपकी रेजिडेंशियल वाली रिपोर्ट आ जाती है. ऑलराइट, ये मैंने भेज दी रेजिडेंशियल वाली रिपोर्ट. प्लीज अपने फोन पे खोलिए, प्लीज ओपन इट ऑन योर फोन. और पहले पेज पे, फर्स्ट पेज, प्लीज ओपन इट ऑन योर फोन एंड ऑन पेज नंबर 1 यू विल फाइंड अ टेक्स्ट जो बोलेगा लिंक टू 3D. उसको ओपन कीजिएगा और ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल की भी आ जा रही है आपके पास रिपोर्ट. So I've shared 2 reports on that. If you sign up for Solar Labs, this is what you can create. This is all what you can create. एक रेजिडेंशियल रिपोर्ट क्रिएट करने में 15 मिनट लगते हैं. एक कमर्शियल रिपोर्ट क्रिएट करने में विद 3D एनालिसिस, शैडो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, जनरेशन एनालिसिस, SLD एंड CAD जनरेट करने में आपको टोटल मिला के आधा से पौना घंटा लगता है. And imagine if you can do this with every customer. Do you think you would be able to convert more or no? Because आपकी conversation ही start हो रही है इस बात से कि hi, you sent us a query. This is how your home will look like solar. Would you like to talk? Do you think it is something that you're looking for? And would you like to talk?
ठीक है? Amit, can you just share the report over the chat also, because few people are not on the WhatsApp, so that if the report can see here on the chat. Ask everybody to join the group, na Baba. You They are have not on WhatsApp. They are not on WhatsApp. They're not on WhatsApp. Okay. Yes, exactly. Okay. So I am. All right. Guys, 1 second. थोड़ा सा confusing है. Chat. Can I share in chat? I don't know. Guys, I cannot share it on. Here's the WhatsApp group. Yeah. Not on WhatsApp. Can you please share these items here? I don't know how to share this item here. Oh, okay. All right. Dropbox, Microsoft, Google, Microsoft, your computer. Your computer. Yeah, your computer. Okay. This PC. All right. Akshay, can you do it? It's in the, you're in the WhatsApp group. Na, मैंने वहाँ share किए हैं. Can you download from there and share? I'll continue with the webinar. That's the report, right? Yeah, the report, the 2 reports that I shared. So आपको Zoom पे भी मिल रहा हो. ठीक है? So now the point is, so this is what Solar Labs does for you. Now let's do a very, very short exercise. एक छोटी सी exercise करेंगे. हम सबके सब यहाँ पे. Okay, I'll ask you to close your eyes. So don't worry. I'm on the other side of screen, so no hanky-panky from my side. Okay, everybody close your eyes. And if you're driving or in the car, please do not. Okay, please do not close your eyes. Okay, please close your eyes. Okay, imagine a building. Step number 1, imagine a building. Come on. Imagine a building. Now, visualize the rooftop of the building. अपने दिमाग में उस rooftop को visualize कीजिए. 1 second लगेगा आपको. Now, visualize a solar installed on that rooftop. Visualize the solar installed on that rooftop. कर लिया? Now, 2 more things. Visualize the color of the walls of the building and the doors and windows. The color of the walls and doors and windows. हो गया? Now, आप सब लोगों ने chat में लिखना है very, very fast. जल्दी जब मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा. दीवारों का रंग क्या था? What was the color of the wall? Come on, everybody, type in chat. एक साथ. What was the color of the wall? Okay. Cool. Second question. What type of building was it? Residential, commercial, R or C? R or C? R or C? R or C? Now, I want you to look at the chat. Everybody has thought different. मैंने तो एक ही चीज describe की थी ना? I described the same scenario to everybody. Everybody thought different. So the point is, when you describe this to your customer, what you are describing and what customer is thinking are 2 very, very different things. And it's very important to make sure that the customer thinks what you are describing. And that is where your step number 1 of the follow-up comes into play. Before you start a conversation, you go ahead and set the parameters for your customer by giving them a 3D design, so that when you are talking to them next, they are thinking exactly as per the design. This is what we are talking about. This is what we are thinking about. And this is what we will have a conversation in the future. You set the boundaries, you set the parameters, you tell them, hey, the color of the walls is going to be white. The building is going to be like this. The solar panels are going to be placed like this. They will be at high like this. Now what happens? Your follow-up becomes smoother after this. It is very important that follow-up is not always about, hey, what have you decided? When can you give me the money? Follow-up is always about, do you understand this? Do you think that this is the same thing that you and I are thinking? It's very important that हम ये सब चीजें करते हैं. Okay, I'll continue further on this. Now, this is the message. ये एक email message है. Hi Sharma ji, the reason you are getting this message because you requested information about solar rooftop system on your home in Delhi on our website. Let me first congratulate you on taking the first step towards sustainable future. I will share all these templates with you. Don't worry. I have these templates, and these are all templates will be shared in the WhatsApp group. Okay. For those who are not, just drop me a message and it will be shared separately.
Okay, we have come up with a solar rooftop design for your residence. Please have a look. This is where you initiate the contact. Now, after this, you will get 3 types of customers. Number 1, who will say, yes, this is interesting. Let's have a chat. Number 2, who will say, no, I've dropped the idea. Both are very good customers. Number 3, the worst kind of customer. ये वो customer है जो जवाब ही नहीं देता है. They don't reply. Now, what do? You say namaste or bye-bye? No, that's not how it goes. As a business person, you have to follow up with the customer. But what do you follow up with? Hi, I called you yesterday or sent you a message. When can we have a chat? No, what you do is you open the report, take out a page and send the message number 2. Hi, Sharma ji, did you know that the estimated savings on your solar on your home? Here is a visual representation of your ROI and savings over 25 years. I'm sure this interests you. If you have any questions and how you can get these savings, please contact with our solar specialist. You're giving your email, you are giving a link to book an appointment, you're giving your name, number, email ID. Are you forcing the customer here to do anything? Yes or no? Are you forcing? Are you overwhelming the customer? Are you providing value? Pehla question, are you forcing the customer? Yes, no, please reply in chat. Everybody says no. Question number 2, are you providing value? क्या आप value दे रहे हैं उसको? So, is there a reason that they should go away from you? No. This is value. And people do not respond on 1 message or 2 messages. कभी 10 लगती हैं, कभी 15 लगती हैं. Sometimes you have to go for a longer period. But point is, you have to judge this. How about the next message after this? If customer responds or does not respond. Okay, let me open it up. We send another message, day 3. This is expected annual production. The same message. Most of the people have the misconception that the rooftop solar system generates same energy throughout the year. However, that is not the case. Here is an estimate of how much energy a 10 kilowatt rooftop system will generate month on month if installed on your home. It could be a 5 kilowatt, it could be a 2 kilowatt, it could be a 20 kilowatt, it could be a megawatt, 200 kilowatt, any system. You have these values. Did you know the estimated savings on the solar on your home? If you have any questions, give me a call. You are, matlab hota na, right now you're building trust again and again and again and again. Day 4 message. In my last message, I shared with you the estimate generation of solar rooftop plant with your home. I forgot to send you the corresponding savings that you might have as per the generation. After all, it's easier to calculate savings in rupees than in units. Thoda sa mazak bhi hota hai. You have to make sure that the customer is entertained as well. Follow-up is entertainment. It is not always serious work. If you have any questions, repeat is the same thing. Aap email ID de rahe hain, aap apna phone number bhi de rahe hain. And it is very important to write your phone number here. Because when you write your phone number, it actually becomes blue in WhatsApp. And people can chat by not texting reply, but by clicking on that number as well. Customers आलसी होते हैं. You have to give them, they are lazy. You have to give them every possible option of communicating with you. Don't hold back. Don't think that they can press reply. No, write your email, write your phone number, write your LinkedIn, give them the connection request, give them every possible way that they can connect with you. Post this. 5th message, it could be after 2 days, 5 days or whatever. 𝗗𝘁𝗲𝗃 ji, most of my clients ask me what would be the difference if they go solar. So I share this graph with them. Hopefully this will show you what you're looking for. If you have any questions, give us a call. Now, this is complete value-based system without being intrusive, without annoying the customer. You're not calling them again and again. You're sending videos. Iske baad, you can also send them your contact card. मैं अभी WhatsApp पे अपना contact card भेज रहा हूं. Now check it out. उसको open जरूर कीजिएगा. Okay. Attach, contact. This is my contact card. I send it to each and every one of my customers. You will see that इसमें दुनिया भर की information है. It has loads of information. It's sent on the WhatsApp group. I would request you to save this contact card, open it on the phone, and when you open it, it has 3 email IDs. 3 phone numbers, my LinkedIn profile, my name, my solar keyword,
every bit of information is there. यानी कि मेरी पूरी जन्म कुंडली है वहां पे. I make sure that my customer can connect with me on social media, on phone, maybe on not one number, but the other number, maybe on not that, then the other number, my support contact, my support email, my personal email, and my official email. This is very important. I have created 5-6 different such contact cards, which I send to customers depending on my requirement. Now, I would request you to please save this number. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप फोन पे हैं, इस नंबर को सेव कीजिए, बिकॉज दिस विल हेल्प अस कनेक्ट फर्दर. इसमें मेरा लिंक्डइन भी है, सो सोशल मीडिया पे भी हम कनेक्ट करेंगे इसके बाद. प्लीज सेव दिस नंबर. सो वन स्टेप फॉर एवरीबॉडी, सेव अ नंबर फॉर योरसेल्फ इन योर ओन फोन. पुट योर नेम, then after that space and put solar rooftop, because the customer may not remember your name, but solar rooftop he'll remember or she will remember. So when they search their card for solar, your number comes up fatak se upar. It's very important that then that number has email ID, phone number, LinkedIn, your address and everything. So these are key cards. And one very important part about this, when you send a number like this to your customer and they save it in their phone. Now listen to this very carefully. When you send your number like this to your customer and they save it in their phone, this number enters their Google account, which means the email IDs that you have sent are automatically added to their safe sender list. Means that the emails that you send from the email that has been stored in there has a higher chance of landing in their inbox rather than spam or something else. Isn't that something that will be good? If yes, if that is something good, type T in the chat box. T for Tango. Now you are getting there in the inbox. Make a light version of Solar 4 to 5 pages also. You can actually do that, my friend. You can do that. It can create 4 to 5 pages. You get that option. But point is, follow-up is once again not just about making the sale. It's about a lot more. Okay. A general blog message. It's a very simple. Hey Sharma ji, I found this article. This is something that I told you earlier. I'll give you all these messages, so everybody don't worry. Here you're not asking for any request, any money, any appointment or anything in an intrusive manner. Happy reading. Link of the blog. Looking forward to talking to you soon. Put in your LinkedIn link over there instead of a phone number and everything. Let's see how many people connect over there. Some will not. This is about connection. पकड़ा गया ना LinkedIn पे, उसके बाद उसको message डालो ना LinkedIn पे. All right. Then environmental impact. Again, the same thing. All right. And this one is for the data-driven clients. There are clients who are driven by data. Data दो जी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, how much I'll save per second बताओ, every minute का बताओ, and all those things. So things you can do with this data. This is something that comes out of the Solar Lab software as well. Multiply it with the unit value to show them savings on and total of 25 years savings. Every year, how much they will save, and in 25 years, how much they will save. Do one step ahead. Convert it into a SIP. Show them if they save this much per year and do a SIP in mutual funds, there's a possibility that they could save more than about 1 crore to 4 crores. A 5 kilowatt system or a 10 kilowatt system or a 10 kilowatt system can actually pave way for 3 properties in their lifetime. अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि अरे यार ये तो गलत बात होगी ना, आप सोलर की सेविंग्स को SIP से कनेक्ट कर रहे हो और फिर then you are connected with mutual funds. My question is, why not? If you are saving money, it is your choice. आप उससे गुलछर्रे उड़ाओ, you go and donate it to somebody, or you put it in SIP for the safety. You are putting solar on your rooftop because you want some financial benefit. Now, what if I could multiply that financial benefit or show you a way in which that financial benefit can give you 100 times more? Does it make it more interesting suddenly for the customer? Yes or no? Y or N? Chat box, guys, chat box. Does it make it interesting for the customer when you can show them, yeah, ye bhi option hai. This is an option. If you put it in SIP, whether they do it or not is completely up to them. You're not forcing them.
But then most of your customers will not be aware of this. I guarantee 95, 98% of your customers will not be aware that if they save this 5,000 rupees or 10,000 rupees, that they can apply it in mutual fund SIP for 25 years. It will actually cover their home loan. If you take a home loan of 1 crore, you end up paying 2 crores. Install a 10 kilowatt system in 25 years, it's free. Your home, your solar system paid for your home. Now, that is a very, very powerful statement. That gets your customer thinking. And when when your customer starts thinking, at that time, that is when the iron is hot. That is when you go ahead and you pitch for the deal. Because at that time, they see the value in this. Now, we're coming towards the end of this. And before we move ahead, how many of you are on LinkedIn? Type yes in the chat box, YES. Chat में लिखिए, guys. How many of you are on LinkedIn? Yes, yes, yes. No LinkedIn. Wale, Rahul, why not LinkedIn? Come on, join, guys. Okay, a lot of you. Now, I'm going to share my contact for LinkedIn. If you're not connected with me, I would request you to please connect with me on LinkedIn. Chalega? Would that work? Okay. My internet connection itself is unstable. I got my LinkedIn. I'm just sharing a link. Please click this link and join me on LinkedIn. Okay, मैं chat में share कर रहा हूँ. Chat. Oh, बहुत सारा आ गया. If you're not on LinkedIn, that is no problem. Join me on Instagram. Check me out on Instagram and join me over there. Check me out on Instagram. I am with the name of 𝗗𝘗𝗲𝗿. But if you are in solar industry and you're working, LinkedIn is an absolute must. It keeps you aware of what is happening, who's doing what, your competition and your customer. A lot of your customers. I am not much social tech savvy. कोई बात नहीं है, sir. That is no problem. If you're not tech savvy on social media, nahi hai to nahi hai. But if you are in solar and you're working here in solar, I would recommend getting a little tech savvy. Ek app hi to download karni hai phone pe. That is all you have to do. Okay, and it works. It really works. It really works. Oh, chat. I've shared my LinkedIn profile. Please click on it and join me on LinkedIn. Send me a request and everything. Okay. Now there is a very important question. Can you see it on the screen? Let me see. Let me see. Now the question in everybody's mind right now is, what if the customer does not respond even after sending these messages and follow? होता है ना? अब किस के दिमाग में आ रहा था? You can raise your hand or type me. किस के दिमाग में आ रहा था? Who was thinking about this question? Come on. I knew it. होता है. Definitely होता है. और होगा. It will happen. What happens if the customer does not? अधिक समय यही होता है आज तक. ये प्रोसेस करने के बाद ये कम होगा, लेकिन फिर भी होगा. ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, फिर भी होगा. उस केस में, ठीक है, I hope you're ready for this. ठीक है, fasten your seat belts and this is what you do. उसको बोलो नमस्ते और छोले खाओ सस्ते. If the customer, after all of this, does not respond to you, say namaste. Why? Because there are only two reasons. Either you are talking to the wrong person. Especially this happens when you are dealing with a business client.
or second, they are doing complete time pass. In both cases, you have to change your strategy. And in this whole process of, follow up, आप बीच में phone call भी करेंगे. There would be 1 or 2 phone calls or videos. So you may get to know about this at an early stage or not till the end. But there is a very high chance that you will get to know that you are either not talking to the right person or that person is doing time pass at an early stage. So forget about them. Focus on the people who are responding. It is very, very important. Okay, so going to the next stage, this is your follow-up funnel. I'll share this. Okay. Follow-up does not start when you start talking to the customer or give the proposal. Follow-up starts when you run an ad on social media, when you put a message in WhatsApp to get information. Follow-up starts when somebody tells somebody else about your company and they send you a message. That's called a lead magnet. Then you have nurturing. Then you have your tripwire. Generally, tripwire is the product where you get them to your funnel, where you get them to your system. Okay. And this could be, I will send you a report. Let's have a meeting. Did you see this 3D design? Okay, let's have a call. When the customer commits, that is a tripwire. That is where a tripwire. Then you sell your core product. Again, the core product is split. Core product is not always going and installing solar. Core product is commit to a phone call with me, commit to a Zoom meeting with me, commit to talking to my solar expert, commit to a site visit. These are all core products. Okay? Isko actually, when you have this kind of core product, it's called the foot in the door strategy. अगर आप किसी को पहले दिन जाके 10 लाख का सोलर सिस्टम बेचने जाएंगे, तो there's a 100% guarantee that वो आपसे नहीं खरीदेगा. But what if you ask them to commit to a site visit? Then you ask them to commit to a meeting. Then you ask them to commit to pay 499 rupees for a 3D design or something. Or maybe spend 1 hour with you designing their solar and modifying their solar. These are smaller steps of building trust. And this is all part of follow-up. Don't go with guns blazing and पहले दिन ही आपने टोप निकाल लिया, चलो जी 60,000 रुपया लीटर है, आप ले लो सोलर, या 60,000 रुपया किलो है, आप ले लो सोलर. Then they treat solar as आलू प्याज. 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, वो 45 रुपए में दे रहा है, आप 50 में दे रहे हो, वो 55 में दे रहा है, आप 60 में दे रहे हो. That is where it is treated. If you have this foot in the door strategy, at that time, they treat it as a step at a time, which is very important. That is how it works out. Then you have your profit maximizers, and then you have your return path. Now, while coming to the end, how many of you want to quickly try and implement this follow-up process? How many of you would like to have this type of process? And one thing, before anybody leaves the webinar, I will not try to sell you anything. You don't have to buy anything today or tomorrow, as a matter of fact. Okay? So, डरना नहीं, जल्दी जल्दी exit का button मत दबाना. ठीक है? I am not going to sell you anything. So, how many of you want to quickly try and implement this follow-up process? Would you like to actually go ahead and learn a little more about this process and how it can be done? Because there is a lot more to this process than I could give you in the last 1 hour. We've been on there for 1 hour. Come on, guys. Yes, I will. Oh, yes, you will buy. Thank you, thank you, thank you. You can buy. You can definitely buy. You can connect with me on WhatsApp, and we can buy. Any particular, you mentioned hashtag? Yes, I mentioned hashtag in my contact card. The reason is because hashtag gets my name a little up on the list. When you save my name, it will come a little up.
So this is a special character. Google and hierarchy of alphabets give special characters a higher preference. I will definitely share the presentation, guys. Don't worry about it. आपको ये सब ये presentation and everything you will get it all. Okay, but you will have to be connected with me on WhatsApp. I am not going to send this on an individual basis. आपको अगर ये presentation चाहिए तो you will have to drop your number on my WhatsApp and join the group. I will send you the group link because मैं इस ग्रुप पे ही शेयर करूंगा. इस ग्रुप पे कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट मैसेजेस वगैरह नहीं आएंगे. Of course, we will keep sharing some interesting articles and resources that we have that we'll share on this group in the next 2-3 days. The link to this presentation and everything will be shared in the group because it is very difficult otherwise to share it with everybody on a one-on-one basis. Okay, now the floor is open. If you have questions, you can open your mic and let's have a 5-minute chat. ठीक है, अगर आपके सवाल हैं, मैं बैठा हूं. I am happy to answer your questions. Please raise your hand and let's have a chat. Raise your hand and let's have a chat. Anybody who has a question, Hindi में हो, अंग्रेजी में हो, I am hopefully able to. Trupti, please go ahead. Hi. So, typical, what is the time you have seen in residential deals and commercial deals? If it's an outbound, means that if we have done lead generation, then how much time have you seen in residential and commercial deals? I have seen residential deals close in 1 week to about 3 months. And I have seen commercial deals, depending on how big a deal it is, close between 3 months to about a year and a half. The difference in this is that how prepared or how interesting solar is for the person that you are selling to. Has somebody else gone ahead and taught them about solar and you come in at a point where they know most of about solar and then they talk about specifics and close the deal? Or is it that you are starting raw? You have to teach them. Okay, the best part about teaching a customer is if you teach them properly, if you educate them properly, if you go with the intent of help rather than to sell. Okay, whether they buy from somebody else, whether they buy from you, they will always keep coming back to you for advice. And the more they come back to you for advice, the higher the chances that that will be your customer, even if you are expensive. Now, if you are expensive 50%, of course, they're not going to come to you. Okay, but if there is a 5-7% difference or a 10% difference, even there is a higher possibility they will go with you because you educated them. Solar is a really price sensitive market, and it is our fault as installers, as solar industry, because all we do is we share the price on day one. When I was selling EPC, when I was doing EPC on my own, which was about 4 years ago, I never used to give price on day 1, day 2 or day 3. And most of the customers you will find, they'll say, "Aap baki chhodiye, mujhe price dijiye. Send me a quotation." ठीक है, my answer to them is, सर अगर आपको किलो के भाव आलू प्याज के हिसाब से खरीदना है तो 60,000 रुपए किलो है, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए. These kind of customers will not come into your fold and they will suck the life out of you because they are comparing your solar on price. Now here, if you give the lowest price, you are most probably somebody who will close the deal in 15 days. But if you're not giving the price, you may never close the deal. So you have to understand that customer. So bring the customer to your level before you give the price, before you figure out how long should this take to close. Okay. And I hope that answers the question. Thanks, Amit. Yeah. Pleasure. Anybody else who is interested in asking a question, please raise your hand and let's talk. Come on, guys. Prit, go ahead. Go ahead. Yes, my question is that sometimes the company in EPC में company सब same काम करती है, तो कई बार बात प्राइस पर ही अटक जाती है. कई बार नहीं, हर बार बात प्राइस पर ही अटकती है. अगर आप प्राइस के हिसाब से बेच रहे हैं तो बात प्राइस पर ही अटकेगी. प्लीज कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन. यस, तो उस समय जब जो लोग है 5,000 के लिए भी दूसरे के पास जाने के लिए तैयार है, उस समय नेगोशिएशन कैसे करना है?
यार तुम 5,000 के लिए बात कर रहे हो, लोग 50 रुपए के लिए 2-2 मेगावाट का सिस्टम बदल देते हैं, 5 पैसे के लिए, 1-1 पैसे, आधे-आधे पैसे के लिए कर लेते हैं, ठीक है। उस समय नेगोशिएशन कैसे करना है? उस समय नेगोशिएशन नहीं की जाती है, दैट इज टू लेट टाइम फॉर नेगोशिएशन। उस समय हड़बड़ी होती है, उस समय फिर एक ही तरीका होता है, भैया उससे लोअर प्राइस दे दो और कर लो। अगर आपको प्राइस पे कंपीट नहीं करना है, आपको डे 1 से मेहनत करनी पड़ती है अपने कस्टमर के साथ। वो मेहनत मैंने आपको थोड़ी सी यहां पे दिखाई थी। When you approach a customer in a different way in making sure that they understand solar and the solar given by you, there will be a less competition or less hustle bustle जब आपकी प्राइस की बारी आएगी, प्राइस की बात आएगी। आप ये नहीं कह सकते सर आप पहले देखो तो सही वो क्या दे रहा है और हम क्या दे रहे हैं, हम टियर 1 दे रहे हैं, हमारा तो जर्मन इन्वर्टर है, हमारा ऐसा है वैसा है, सब लोग वही दे रहे हैं यार। और अमित जी, दूसरा सवाल ये है कि आपने जो ये 17 डेज का फ्रेमवर्क दिया है, हाँ, तो लाइक हर एक कस्टमर ने, आपने बोला कि कहीं में 10 दिन में हो जाएगा, कई बार टाइम भी लगेगा, तो एवरेज एक कस्टमर पर फॉर एग्जांपल 17 दिन में 3 बार कॉल आया और 17 डेज का फॉलोअप है, तो एवरेज हर कस्टमर को हमें अगर कन्विंस नहीं हो रहा है तो कितने दिन तक ये फ्रेमवर्क हमें कंटिन्यू करना है? मेरे ख्याल से अगर 15-17 दिन तक आपका कस्टमर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसको बाय बाय बोलो, वो इंटरेस्टेड नहीं है। रिस्पॉन्ड यानी कि आप उसको भेजते जा रहे हो ये सब और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, फिर डिपेंड करता है कि कस्टमर रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहा है, क्योंकि बीच में आपके फोन कॉल्स होंगे, वीडियो होंगे, आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, उसके हिसाब से आप तब तक उसके साथ रहिए जब तक काम नहीं होता। अब कई जगह पे क्या होता है, कस्टमर बीच में फोन उठाना बंद कर देता है, गिव मी 1 सेकंड। फॉलो अप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, व्हेनेवर यू क्लोज one conversation on the phone, on the video, make sure that you have set up the next one, चाहे वो 1 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आपको आपका कस्टमर बोलता है भाई अमित, मैं अपना ही नाम यूज कर, भाई अमित यार हम लोगों ने ना अभी इसको ना अपना बैक बर्नर पे डाल दिया है, अभी शायद हम सोलर के लिए नहीं जाएंगे, यहां दिल टूटता है। बट देन इसको जाने मत दो। अगर वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है और बात कर रहा है तो उसको बोलो सर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट लेट्स डू वन थिंग, आई एम प्रीटी श्योर कि सोलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी काफी देर कॉन्वर्सेशन रही है। सो एक काम करते हैं, मैं आपके साथ 1 महीने बाद फॉलो अप करता हूं, ठीक है। सो जस्ट एक फोन कॉल होगा एंड हाय हेलो कर लेंगे। अगर आपके प्लान्स में कुछ चेंज आया होगा उस टाइम पे तो आगे बात करेंगे, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट मीटिंग के बारे में बात करेंगे। दिस इज अ वेरी कैजुअल अप्रोच, लोगों को लगता है, बट देन सेटिंग अप दिस मीटिंग ऑन द गूगल कैलेंडर, सेंडिंग देम अ लिंक, एक्चुअली मेक श्योर दैट दे आर गिविंग यू परमिशन टू गिव देम अ कॉल अगेन, वो भाग नहीं रहे। अगर आपका कस्टमर आपको कहता है कि भैया अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ही आपको फोन कर लेंगे, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड, यू हैव टू पुश अ लिटिल हार्डर इन देयर। बोले अमित जी बात ऐसी है कि सर मेरी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, यू हैव टू शो टू योर कस्टमर दैट यू आर आल्सो बिजी, नोबडी लाइक्स टू टॉक टू अ वेला पर्सन। अगर आपके पास कोई काम धाम नहीं है, आपसे कोई बात करना नहीं चाहता है, सर मेरी भी अपॉइंटमेंट्स होती है, मैं अभी के लिए एक अपॉइंटमेंट अगले महीने 3 तारीख की फिक्स कर रहा हूं, इट्स अबाउट 30 डेज 35 डेज है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा फोन कॉल करूंगा, अगर आप बिजी हुए उस टाइम पे तो आप मुझे बता दीजिएगा अमित आई एम बिजी, अगर नहीं हुए तो 5 मिनट बात कर लेंगे। दैट वे इट इज ऑन आवर कैलेंडर एंड वी आर बोथ अवेयर ऑफ इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ो मत उसको, but then start using Google Calendar, make sure that you have the next, and इस दौरान उसको 1 या 2 बार कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर भेजो या फिर जनरल इनवाइट भेजो, उसके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके रहो। हम लोग अपने फॉलो अप में होमवर्क करना भूल जाते हैं, द थिंकिंग पार्ट। Is it interesting to follow up with 100 people and closing 1 deal, or follow up with 10 people and closing 3 deals, or even 1 deal? 10 लोगों को फॉलो अप करो, 1 डील क्लोज करो, 100 लोगों को फॉलो अप करो, अपने दिमाग पे टेंशन लो और 1 डील क्लोज करो। व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग? टाइप 10 और 100। 10 इज इंटरेस्टिंग, राइट 10 कि 10 को बात करके 1 को क्लोज करेंगे, 100 को बात करके 1 को क्लोज करेंगे। इट्स अ डिफरेंस, 10% क्लोजर एंड 1% क्लोजर। ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन भाई?
I think it does. I think it does. Prit, that answers your question, correct? You're on mute. Yes, sir. Perfectly. All right. Trupti, before you go ahead, I'll give somebody else a chance. Shivang, Pandey. सर आपने एक वो बताया था कि शुरू में अगर आप सिखाते हो क्या तो है? बेस्ट रहता है। सर आप शुरू में सिखा रहे हैं, जैसे अगर कस्टमर से शुरू से ही आप उसके साथ कांटेक्ट में हो, सोलर के बारे में सब कुछ आप ही ने बताया है, तो वो आपके पास एडवाइस के लिए आता है, वो तो ठीक हो गया सर। लेकिन अगर बाद में आप एंटर करते हो पिक्चर में, तो कैसे कन्विंस करें? ये तो भी उसको एडवाइस करना शुरू करो ना। आप ये तो जज करो कि किसी ने उसको लोग पट्टी पढ़ा रहे हैं या जनरली उसकी हेल्प कर रहे हैं। गेट इनटू अ कॉन्वर्सेशन और अ रिलेशनशिप विद अ कस्टमर विद द माइंडसेट ऑफ हेल्पिंग देम। ये आपका धर्म है, उस माइंडसेट से जाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मतलब वो चैरिटी करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यू विल डू बिजनेस, दैट इज द मेन फोकस, बट देन अप्रोच अ कस्टमर with the intent of helping and not with the intent of selling. अगर मदद करने जाओगे सेल हो जाएगी। ये बहुत अजीब लगता है। It is a very difficult concept to kind of gather around, but point is go in there to help them. Agree with the customer. Try to help them. Don't try to call them every हर कॉल पे उनसे ये मत बात करो, अच्छा सर आपने क्या डिसीजन लिया, अब हम डील कब क्लोज कर रहे हैं। These questions are something where customer feels कि आ गया मुझे बेचने, आ गया मुझे चपत लगाने। वी आर मैमल्स, हम सब के सब ऐसे ही सोचते हैं। कार देखो, इंश्योरेंस का कोई कॉल आता है, हेलो भी बोलते हो। अगर फोन पे दिख रहा होगा रेड सेक्शन तो वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर उठा भी लिया, हाय सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक, हेलो भी बिना बोले काट देते हैं हम लोग यार। व्हाई? बिकॉज हमारा माइंड कहता है यार ये अभी मेरे को कुछ बेचेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। People are interested in buying, but people are not interested in being sold to. आप लोगों को बेचेंगे तो उनको बुरा लगेगा, अगर लोग खरीदना चाहें वो अच्छी चीज है। Everybody loves shopping, but you try to sell something to somebody, that is not very good. So when you have to enter in a relationship with a customer, this is how you get to know कि वो पहले से ही सोलर के साथ है। वो आपसे डायरेक्टली प्राइस मांगेगा, वो आपको बोलेगा आप बाकी सब छोड़ो, एक काम करो मेरे को 5 किलोवाट का प्रपोजल भेज दो। So यहाँ पे ask them a question, सर लगता है आप पहले से ही कुछ लोगों से कनेक्टेड हैं, तो पहले एक काम कीजिए अपनी लोकेशन तो भेज दीजिए, पहले मैं तो ये देखूं कि मैं आपको सर्व कर सकता हूं या नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर को थोड़ा सा धक्का लगता है, वो फिर आपसे बात करता है। बिकॉज जनरली कस्टमर्स क्या होता है, अरे भेज दो यार, अब प्रपोजल चाहिए, अच्छा 5 किलोवाट कितने में दे रहे हो। This is where you understand that the customer is actually talk to somebody and is not satisfied. एक satisfied customers आपसे price नहीं मांगेगा, पहले आपसे बोलेगा आप अपनी company profile भेज दो or something else, or they will have a conversation with you. That means somebody else has also had a conversation with that customer. ठीक है? So hope that works. Does that answer your question, bhai? Thank you, sir. Yes, sir. Yes. All right, Trupti, once again, back to you. Please ask a question. Thank you. So, we hear the customers say, yes, we definitely want to install and we are just in the process of buying and seeing. So they don't say no. How to drive the urgency? How to make them buy the plant? Otherwise, it will keep delaying. So they don't say no. If you go into a conversation with that mindset, they will figure it out. Don't try to force them into a relationship. Ask questions. Yes, you are. Hi, Trupti. In our last conversation, you did mention that you are somebody who would like to install solar. I just want to know what would it take? What would be the scenario be if you had to go and take a decision about going solar in the next 10 days? Then they give you the problems. What it will take, whether it is price, whether it is their internal management, whether it is the things that they have to figure out, or whether it is something from your side. People don't like to say no. They will either start ghosting you or creating a smoke screen.
then be direct at that time. Hey, Trupti, it's been quite some time that we have been in touch and this doesn't seem to be moving forward. Is it something that I'm doing, or is it something that is happening in the company itself that is kind of not letting us move ahead? Let me know if this is the right time, or we can put this on back burner for about 15-20 days and I'll get in touch with you later on that. This is not rude. Don't consider these statements to be rude कि हम अभी के लिए इसको रहने देते हैं और बाद में आपसे बात करेंगे. No, it is your time as well. It is precious. It is important to respect that time. So respect that time and ask the other person to respect it as well. Ask questions. Sometimes you will also have to ask a question. You know, Trupti, most of the times when people say these kind of things to me, please don't mind this, but there are only two reasons. Either I've not been able to explain solar, or there is something wrong from my side, or this is usually financial. So which one is it? Then you give them the permission to go ahead with it. Or, hi Trupti, just wanted to know when we would go ahead with this, because it's been quite some time. If this is on back burner, let's chat after a month. But if you need any technical advice, we are at your service. That's it. Don't try to sell every time. Don't try to close the deal every time. Try to know the problem or the pain point of the customer. When you approach it that way, they open up. Because everything else is a smoke screen. You have to go through that and you have to clear that smoke screen in order to get to the real problem. So ask. पूछो. जगजीत सिंह का एक बहुत पुराना डायलॉग है, पूछन चिकी हर जाएगा. If you don't ask, you will not get the answer. Ask. Have the guts to ask. Don't be rude, but have the guts to ask. डरो मत. Does that answer your question, Trupti? Yeah, thanks a lot. Very useful. Okay. Anybody else who wants to ask a question? Yes, sir. कौन है? Who is it? Now. Yes, मैं. Sir, सोलर लैब का आपने उपयोग किया था फॉलो अप में, वो अलग अलग मैसेजेस के बीच में. तो उसके बारे में बताइए ना. यार, सोलर लैब एक सॉफ्टवेयर है. आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे अपना लिंक भेज दीजिए, ये अपना नंबर भेज दीजिए और बोलिए कि आप सोलर लैब में इंटरेस्टेड हैं. मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं अभी चैट में. एनीबडी हु वांट्स टू बुक अ पर्सनल वन-ऑन-वन विद मी, यू कैन यूज दिस लिंक टू बुक दैट. ओके, आप ये बुक कर सकते हैं मेरे साथ एंड हम इसके बारे में बात करेंगे. One second. I'll share it with you. कौन टेंपल चली जाया करिए. हाँ जी. और अमित सर. हाँ जी, बोलिए. दूसरी चीज ऐसी है कि फॉर एग्जांपल 400 किलोवाट, 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, फॉर एग्जांपल आपने जब जो भी स्ट्रेटजी बताई, फ्रेमवर्क बताया, उस हिसाब से हमने काम किया और फाइनली मीटिंग होती है, रूबरू मीटिंग होती है. बड़ा ऑर्डर है 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 1 मेगावाट. उस समय मीटिंग की तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए? अगर आपकी बड़ी है तो सबसे पहले तो आपके पास उसका कंप्लीट डिजाइन होना चाहिए 2-3 ऑप्शंस के साथ. ठीक है, सबसे पहले तो ये. दूसरा, उसके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो. अगर आप 500 किलोवाट की बात कर रहे हैं तो ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल है, राइट? है ना, कमर्शियल इंडस्ट्रियल है, राइट? सो उस केस में 1 सेकेंड, उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि सोलर सेल्स जो होती है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेल. यानी कि आप एक आदमी से बात कर रहे हैं और 10 आदमियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका वो एक कॉन्टैक्ट 4 लोगों से या 8 लोगों से या 10 लोगों से आगे जाके बात करेगा फॉर सोलर. मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा और यहां पे भी शेयर कर रहा हूं. यूजिंग दिस लिंक यू कैन बुक अ पर्सनल 1-to-1 विद मी. मैं 1 सेकंड व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूं. ठीक है, 1 सेकेंड. ये है
ठीक है, आप इस मेरे बारे में, सोलर लैब्स के बारे में, सेल्स स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पर्सनल 1-to-1 बुक कर सकते हैं यूजिंग दिस लिंक. नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड आल्सो क्रिएट एंड टॉक टू योर कस्टमर्स अबाउट दिस. नाउ अब एक मेगावाट स्केल डील के लिए कैसे प्रिपेयर हो. ठीक है, मेगावाट स्केल डील के लिए अगर आपको प्रिपेयर होना है, इन दैट केस मेक श्योर कि आप पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें. आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत आराम से मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से वो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं. कहाँ है, उसने पिछले साल क्या किया, क्यों किया, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो कितना स्पेंड कर रहे हैं. ये ज़ोबाकॉप और ऐसी काफी जगहों पे आपको ये मिल जाता है. उसके लीडर्स कौन हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनसे कनेक्ट कीजिए और उनसे थोड़ी सी कम्युनिकेशन कीजिए. ओके, सो दैट जब आप वहां जाते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ बात हो करने को. ठीक है, नमस्कार अमित जी, आपका कल का लिंक्डइन का पोस्ट देखा था, बहुत बढ़िया था, मैंने कमेंट भी किया था उस पर. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट पॉइंट इज व्हाट, ये आदमी मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्टेड है. दैट इज समथिंग दैट गोज इनटू द माइंड ऑफ दैट कस्टमर. इट हेल्प्स. So preparation and homework is all about making sure that you are going when the customer is prepared. Customer आपको पहले दिन बुला लेगा, आप जो ही पहला मैसेज भेजेंगे ना, पहले दिन आपको बुला लेगा, एक काम करो, आप मीटिंग के लिए आ जाओ, साइट विजिट के लिए आ जाओ. आप तो बड़े खुश हो रहे होगे उस टाइम पे. यस और नो भाई, यस और नो. If the customer calls you for a site visit on day 2 or day 3, खुश हो रहे हो यार, यस और नो? यस यस. हाँ, जाना चाहिए या नहीं, ये बताओ. जाना ही चाहिए. बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. क्यों? उसके बाप का कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारे को ट्रैवल करा के, पैसा आपका लग रहा है, आपको साइट के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको उसकी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपने अपना कोई होमवर्क नहीं किया. ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बट मुंह उठा के जाने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला. यू विल नेवर बी एबल टू क्लोज अ डील. What you do is you then invite the customer कि कस्टमर को आप एक जूम मीटिंग या गूगल मीट पे लेके आओ ना यार, 5 मिनट के लिए. देखो ना वो कमिटमेंट देता है क्या, वो 15 मिनट की या आधे घंटे की आपको आपसे बात करने के लिए. आप उसको 3D आप उसको वो 3D भेजो ना, उसको बोलो उस पे अपना नोट्स दे कि सर हमने आपके साइट का ऑलरेडी डिजाइन बनाया है, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी थी, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो इस पे हमें कुछ कमेंट्स दीजिए. अगर वो आपको 15 मिनट या 5 मिनट नहीं दे सकता, वो आपको 2 घंटा क्या देगा साइट विजिट के लिए. पॉइंट इज नॉट कि आप वहां जा रहे हैं, पॉइंट इज क्या वो आप वहां जाके फ्रूटफुल है कि नहीं आपके लिए, क्या वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. टाइम पास के लिए नहीं जाना है. सेल्स इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. झटपे से कूद मत जाओ, कस्टमर से भी थोड़ा सा काम करो. एंड फॉर दैट यू नीड टूल्स लाइक Calendly, tools like automatic WhatsApp, automatic SMS, automatic designing tool, solar labs जैसे टूल. अगर आपके पास ये होते हैं, आप एक्चुअली अपना टाइम, पैसा और दिमाग की स्ट्रेंथ और टेंशन ये सब बचाते हैं. Does that make sense, guys? Type yes in the chat box. Yes sir. Cool. आपके सवाल का जवाब मिल गया भाई. 100%. Fantastic, fantastic. अब hello. हाँ. Yes. Who is this? Name? Sir Yash. हाँ यश, बोलो यश. सर अभी आपने कुछ एप्स के बारे में बताया, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया. मैं ये ग्रुप में लिख दूंगा. All right, sir. Thank you. मैं ये ग्रुप में लिख दूंगा. अब मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के विनती, मुझे एक सेल्फी लेनी है. सेल्फी का मतलब ये है कि मैं अपने स्क्रीनशॉट लूंगा. So kindly switch on your cameras, as many people as you can. हाँ, थोड़ी शक्ल देखे, सेल्फी ले. मैं लिंक्डइन पे डालूंगा, आप भी कमेंट कीजिएगा, मैं भी कमेंट करूंगा. ठीक है. Amit, I have a question. Please go ahead while everybody is switching on. Yeah, I just want to confirm with you, like as you said कि हमें client को बार-बार social media पे poke करना चाहिए, hi करना. बार-बार नहीं. ठीक है, जबरदस्ती में और बार-बार नहीं. That's what I'm saying. ये तो मेरे को backfire कर जाएगा ना. नहीं, अभी आप उसके टाइप बंदा है and something like this. आप भैया आप फॉलो अप कर रहे हो उसे यार. you're practically stalking the client in order to get a sale of couple of crores. आप उसको फोन पे भी कनेक्ट करोगे, ईमेल पे भी कनेक्ट करोगे, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करोगे, आप उसके सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट होगे, बट देन इट हैज टू बी अ जेन्युइन कनेक्ट.
A comment like hi does not work. A comment on the post that he has done, उसपे अगर आप एक ढंग का comment देते हैं which makes sense, that is a connect. Nice post, बहुत अच्छा post, wow, these things don't work, that is useless. Make sure that your presence is felt. Make sure that they understand that you are somebody there. And this social media component is not for sales. It is just for connect part of it. कि जब आप उससे सेल्स के बारे में बात करें, उसको याद रहे कि हाँ, ये मुझसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड है. It's very important. You cannot keep calling that person. You cannot just keep sending WhatsApp messages. मैं अपने क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया फेसबुक पे एड्स चलाता हूं. मेरे पास आप सबके ईमेल आईडीज एंड फोन नंबर्स हैं. Now I will give those email IDs and phone numbers to Facebook and I will run an ad for next 6 months wherein जब आप फेसबुक पे होंगे, कभी कभार आपको इस वेबिनार के बारे में याद दिला देगा फेसबुक. Am I trying to sell you anything? No, I'm just trying to be at the top of your mind that when you are interested in buying solar labs, आपको मेरी याद आए. Yeah, fine. Don't stalk the person, but at the same time, stalk the person to the extent that they buy from you. Don't be rude. Don't be cheap. But at the same time, make sure that they feel that हाँ भैया कोई है जो हमारे साथ connected है. Maybe they don't remember your name. Maybe they don't remember your face. But if you remind them, हाँ आपसे तो social media पे भी connected है ना. They don't remember your name, but that is all you want. That is what sales is all about. Okay guys, बाकी जिनको शर्म आ रही है अपना कैमरा ऑन करने में, कर लो यार. एक सेल्फी ले लेंगे. Come on guys, come on. सर एक क्वेश्चन और था. हाँ बोलिए. सर वो आप कह रहे थे ना कि मतलब जैसे फर्स्ट टाइम फोन आता है तो मतलब यूजुअली तो हम साइट देखने जाते हैं. क्यों? तो आप नहीं सर, वो आप कह रहे हो तो आपके वो सॉफ्टवेयर में है क्या वो जो मतलब जीपीएस से वो? ठीक है. बिना साइट you can do. See, साइट विजिट तब की जाती है जब आपको कस्टमर का एटलीस्ट 30% इंटेंट पता चले कि हाँ वो इंटरेस्टेड है या हम उसको सर्व कर पाएंगे. अगर वो प्राइस के ही जाप कर रहा है तो क्या आप एक्चुअली उसको सेटिस्फाई कर पाओगे? Even if you give lowest price, मैं कहता हूं even if you give lowest price, you will never be able to satisfy that kind of customer. So qualify the customer first. I will share with you 101 qualifying questions. ये HubSpot का एक मेरे पास ईबुक है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं. Go through it. Maybe you don't have to ask 100 questions, but उसमें से 5-6 तो पूछो कस्टमर से. भैया तुम्हारा दम इतना है भी कि हम तुम्हारे साथ काम करें. That's your mind. बोलना नहीं कस्टमर को, बट क्या तुम्हारा इतना दम है कि हम तुम्हारे साथ काम करें? It's very, very important. Qualify your customer. Don't waste your time, effort, energy, क्योंकि उससे सिर्फ दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं. Alright, anybody else switching on camera? यार काफी सारे लोग हैं, कैमरा ऑन कर लो. One more thing I'd like to ask you. One moment. Let me take this selfie and then we continue with questions. As long as anybody wants. As long as anybody wants. ठीक है? मैं अभी print screen मारूंगा, so everybody smile. मुस्कुरा दो यार. ठहरो, 1 सेकंड. पेस्ट करने दो. कभी-कभी print screen होता नहीं है. तो मैं पेंट खोल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं इसको. कंट्रोल V. आ गई. So thank you for the selfie everybody. I appreciate it. And now we can continue with questions. तो किसका क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन था. हाँ, कहाँ हो? शक्ल तो दिखाओ. अरे दिखाई. अच्छा हाँ जी. अच्छा, मेरा क्वेश्चन था. एक मेरे पास एक इंक्वायरी सिंस लास्ट 3 months है, जिसको ना एक साइट जो है वो रिवाइव करना है. उसके मॉड्यूल्स के परचेसिंग के लिए क्लाइंट ने मुझसे कई बार कोटेशंस मंगवाए और उसके ऊपर ना हाँ बोला ना बोला, और हर बार मैं फॉलो करती हूँ तो वो सिर्फ मॉड्यूल्स का ही बोलते हैं. मतलब ये है कि दे आर ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट. आस्क देम अ क्वेश्चन, सर साइट कहाँ है? ओके, प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऑन है कि नहीं है?
ठीक है, push a few buttons, ठीक है, make them a little uncomfortable, ठीक है। आप हर बार मेरे साथ बोल रहे हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अच्छा रहेगा, सर आपके दिमाग में कोई प्राइस है क्या? उनके दिमाग में जो प्राइस है ना, that won't be possible right now. बोला है क्या? Have they shared that price? हाँ, yeah. बोलो सर मुझे दिला दो 5 मेगावाट का ऑर्डर मुझसे ले लो। सर ये प्राइस पे मॉड्यूल्स मुझे दिला दो, 5 मेगावाट मैं खरीदती हूँ। दिस इज अ वे ऑफ पुश बैक, क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है यार ये सब, इसका कुछ नहीं कर सकते। पीपल मूव ऑन क्लाउड नंबर 9 ऑन दिस, दे वांट व्हाट दे वांट, बट मोस्ट प्रोबेबली the market has moved about 6 months away from the price that they were talking about. Actually. So you don't push back from your side and tell them, sir ये प्राइस तो मिलता नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो 6 महीने पहले का प्राइस था, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। Tell them, sir I am pretty sure कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, किसी और से भी बात कर रहे होंगे। अगर आपको ये प्राइस कहीं पे मिल जाता है, I guarantee a 5 megawatt of order from my side, please मुझे दिला दीजिए and I will give you your commission also। यहां कस्टमर थोड़ा ना झिंझुड़ जाता है, और ये बहुत जरूरी होता है। यू नीड टू शेक देम अप अ लिटिल, मेक देम रियलाइज, कम टू द रियल वर्ल्ड, जमीन पे आओ, राइट। एंड इसके साथ इतना फॉलो अप नहीं करो। अगर फॉलो अप करते हो, मेक श्योर दैट दे हैव सेट अप अ मीटिंग विद यू। जस्ट डोंट रैंडमली कॉल योर कस्टमर्स, प्लीज डोंट रैंडमली कॉल योर कस्टमर्स। आप वेले नहीं बैठे हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है तो वो कस्टमर समझ जाता है। मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू हैव टू कॉल अ कस्टमर, okay, you send them a message, hi sir, we have been talking for so much time and I would like to have a call with you regarding our this is my link for booking an appointment, let's have a chat for 5 minutes, or if you have a time in mind, let me know. Let them book an appointment with you, that way they are giving you a commitment। 5 मिनट की सही यार, आपको मतलब आपको 5 घंटे बात नहीं करनी है, 5 मिनट की कमिटमेंट। But then that is a commitment. That means the customer is actually willing to talk to you. वहां आपको उस 5 मिनट में वो 1 घंटे की फालतू की कॉल से 10 गुना ज्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट मिलेगा। So make sure that they come to you rather always going to them. Ask them for that commitment. Ask them for that 5 minutes. पुच्छन च की हर्ज है वो वाला। Yeah. In commercial, I got one inquiry, but they said not interested. I will try different ways from now. If somebody said not interested, भूल जाओ यार, वो कह रहा है तुमको not interested. वो straight forward कह रहा है not interested. Why do you want to waste your time on that kind of customer? That's a very good customer. They're very clear. Any other questions? Okay guys, I think everybody is done with questions and we have been on this from 11:30 to 12:30, 1.5 घंटा हो गया, and it was wonderful, amazing, बहुत मजा आया। I have shared the link for booking and one-to-one with me. I have shared that link for booking one-to-one with me already. तो please, अगर आप sales के बारे में और जानना चाहते हैं, marketing के और बारे में और जानना चाहते हैं, या फिर सोलर में आप सोलर लैब्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और if you're already a solar labs customer and how to enhance that experience, book that one-on-one with me. I will be more than happy to help. ठीक है, not trying to sell anything, but yes, my end goal is that some of you will buy, और वो होगा। Right now, I am here to help. If you are interested in seeking my help, I am happy to provide. So I hope this was interesting. Thank you. मैं ये पोस्ट LinkedIn पे डालूंगा, प्लीज अपने तरफ से कमेंट कीजिएगा उस पोस्ट पे, मेरे साथ LinkedIn पे कनेक्ट कीजिए, and we take it from there. All right guys, so everybody take care and see you next time. Bye.